So yes, Ali, first of all, introduce yourself before entering into the snap of transportation engineering for your DFCCIL interview scheduled on 12th July 2022. Yes, sir. Thank you for letting me introduce myself, sir. I am Sayyid Ali Asa and I am from Ayodhya, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Jamia Senior Secondary School, Delhi. After that, I took admission in Indraprasth University in Chaudhry Brahm Prakash Government Engineering College, and I graduated from there in 2019. Meanwhile, in my graduation, I have done internships in PWD Muzaffarnagar and Nagar Nigam Lucknow. After that, through GATE, I got admission in my master's in Jamia Millia Islamia in earthquake engineering. And my MTech dissertation project is earthquake prediction using machine learning. And in my graduation, I have also presented a conference paper on groundwater quality index developments. Thank you. Okay. So, what do you prepare in transportation? Sir, I have prepared railways and highways also. Okay, fine. What is the meaning of a gradient at station yard? Yes, sir. Gradient at station yard. So the gradient refers to the slope that we provide for the movement, or we can for joining two different levels. Gradients at the station yard are provided in order to resist the movement of the locomotive backward. That has been provided as 1 in 400, I believe. 1 in 400. Okay, कोई दूसरा पर्पस है इसको देने का? Sir, for the drainage purpose also the gradient is been provided. That is 1 in 1000, sir, or 1 in 1200 as far as I studied, sir. Okay, fine. So, what is cant? So the cant refers to the super elevation that has been provided in order to negotiate the curve, sir. Okay. So, what is the difference between the cant that we are providing in highway and the cant that we are providing in railways? The cant that has been provided in the highway and the railways are same, sir, because they resist the overturning of the vehicle towards along the curve, sir. Okay. And suppose if you have to calculate this super elevation or cant value, then how will you calculate? So the cant value has been calculated through the formula. In railways, sir, it is GV square by 127, and in railway it is in highway it is V square by 127, sir. R. What is G in your formula? So G is the gauge, sir. Gauge in mm. Okay. Okay. What its value for this metros? Sir, 1435 mm, sir. That is the standard gauge. Okay, fine. So, what do you think? Same formula we are deriving in highways, same formula we have railway, just little variation that we are multiplying here numerator by this gauge value. So, anything else? What we are not considering in railways for deriving this equation? Sir, the basic banking equation that we have considered, in that when we derive for the highways, we consider the wheelbase only, sir. Or but in the railway we consider the gauge as the value, sir. Okay. What is creep? Sir, creep is the longitudinal movement of rail with respect to sleeper, sir. Okay, and how will you analyze from where creep starts? Sir, the creep we analyze in order to check that the rails have the creep. We use creep indicators, sir. And in that case, we have two creep posts stretched at 1 kilometer, and a chisel mark has been made on the rail, and a fish string is attached, and through which we measure the creep value. And if it is more than 150 mm, then the rail should be corrected ASAP. Okay, fine. So there are some theories on the behalf of that. We are just seeing the
creep effect is due to this one. Any idea the theories that we have? Yes, sir. There are actually three theories: wave theory, precursion theory, and drag theory, sir. And in wave theory, it is like we can say that the wheels in the rail wheel suppresses the rail, so it forms a deformation pattern, or we can say a trough, and the adjacent one will be the crest when the wave move forward. So it we can say that it gives a rail a wave-like motion to move forward. And in precursion theory, we have when the rail leaves one rail, when the locomotive leaves one rail and move to the other, it give it a thrust and move it forward. And sir, drag theory, I can't remember exactly, sir. Sorry. Okay, no issue. What is point and crossing, Ali? So the point and the crossings are provided in order to in turnouts, in order to change the track from one part to another. Okay, so what do you think? The rails that we are using at point and crossing and the rails that we are having in the this track portion, both are same or having different composition? Actually, sir, in the rails that are used as specifically the tongue rail has a high carbon or has a medium manganese steel, but other rails can have high carbon or medium manganese steel, sir. Okay, can you tell me what is the side slope of blast? Side slope of ballast, sir, that would be 1.5:1, sir. And formation? Sir, formation 2:1, sir. 2:1. Okay, so can you tell me what formation includes? Yes, sir. What formation? Includes. So the formation. Formation के अंदर? Yes, sir. The formation will include first we have the subgrade. After that, above it we have prepared subgrade, or we can say the subgrade will consist of two parts. First is the lower fill and the upper fill. Then we have the prepared subgrade. Then we have the blanket, sir. Okay. Any idea the blanket material specification? Yes, sir. Actually, the blanket material specification has that its coefficient of uniformity would be more than 4, and its liquid plasticity index should be less than 10. Its depth generally varies from it depends on the axle load that we have providing. It is generally optimum value is 30 centimeters, sir. Okay, fine. So at curves, generally we are providing check rail also. Yes, sir. So what is the purpose of providing the check rails? Sir, check rail prevents the movement of the flange more inside, in order to keep it in line, sir. कैसे? Draw करके बता सकते हो? Yes, sir. Just. Can you see that, sir? Okay, check rails. Yeah, I just want to know at the curves. Yes, sir. At the curve, sir. Check. I have to draw check rail at the curve, sir. किस तरफ होगी check rail? बस यही देखना है. Sir, I can say that the turnout is also a part of the curve, sir. So it would be on the. If you want to ask that, I would say that it would be on the. We don't have turnout. Ali, हमारे पास turnout नहीं है. There is no point and crossing. So just simple curve we have. So at that position, I just want to.
So, sir, the check roll would be inside, sir. inside. Yes, sir. ठीक है, ओके। अच्छा अली, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। Yes, sir. So height of embankment, let it be 6 meter, Yes, sir. and maximum thickness of layer that we are taking is 20 centimeter. Yes, sir. So what we have, so side slope is 1:2. Okay, sir. Okay, and top width is, let it be 6.5 meter. Yes, sir. So can you tell me the width at the lowermost, that is the first layer that we have? Sir, this is the condition that height of embankment and the top width of the formation. You want to know the lower thickness, sir. The first thickness of the embankment. Sir. Bottommost width. Bottommost width. No, Okay, no. sir. Thickness of embankment is given, na? This is 6 meter height fill is given to you. Yeah, And I yes, also sir. mentioned that 200 mm is the thickness of each layer. That Yes, maximum sir, you can take there. You want to know about the bottom layer, sir. हाँ, bottom layer का width कितना होगा? तो सबसे पहली layer हमने यहाँ पे लेड किया होगा. Okay, sir. Let me calculate it. So bottom layer would be, sir. Set. So the each layer would be of thickness 20 centimeter. So I am not sure, sir, what exactly. If we provide that in layers, so sir, the bottom thickness would be first 20 centimeter or something different, sir. No, no, not thickness. Ali, not thickness. Width. Yes. Top में width है 6.5 मीटर. Bottom Okay, layer okay. का जो सबसे नीचे वाला layer है उसकी width कितनी Okay, होगी? sir. Okay, okay, sir. I got it, sir. The width you are asking. So 7.85. What? Actually, sir, I have to, sir, it have to be divided into 30 centimeters layer, and you have to calculate the variation of the embankment based on slope. Afterwards, you can get to the bottom, sir. बताओ ना तो कितना आ रहा है? I give you 20 centimeter. Why you are saying 30 centimeter? Thickness Yes, of layer sir. I give you. Yes, sir. Just a second, sir. $30.5, sir. कितना रहा है? 30.5. ठीक है. Fine. Okay. You must heard about track modulus. Yes, sir. Track modulus का नाम सुने हो? Yes, sir. Track modulus. क्या होता है ये? Sir, track modulus is actually the we can say that it is the stiffness of the track that we understand. It is
is like per kilogram per meter rail per unit deflection. Load on kilogram per meter rail per unit deflection. We have 60 kg rail section, 52 kg rail section. So what is the minimum tensile strength that we should have of the rail? Sir, 72 kilogram per mm square. Okay, that is kind of 72 UTS. Yes, sir, ultimate tensile 72. strength. Right now we are using 90 UTS. Have you any idea about that? Yes, one? sir. Yes, sir. Actually, I have studied it. Sir, 90 UTS is more convenient than the 72 UTS because its service life is 50% more than the conventional 72 UTS rail, and it can carry more GMT. Like the 72 UTS can carry 350 GMT, but 90 UTS can carry 525 GMT. तो इसका ब्रिनल हार्डनेस नंबर कितना होता है? Sir, Brinell hardness number 270, sir. Yeah, and कैसे 72 निकालोगे? UTS क्या का मतलब sir. है इसका? Yes, sir. Brinell's hardness number. Brinell's hardness number actually, sir, is a test that has been carried out in order to understand that its resisting capacity to the scratches. So it is placed with the steel balls and rotated in order to understand, and in order to understand get the Brinell's hardness number value, we have a formula that is P by pi d by 2 under bracket capital D minus square root of capital D square minus small d square. Capital D is the diameter of the sample and a small d is the diameter of the steel balls. Okay. Can you tell me why spacing of sleeper is being limited? That should be the minimum value. Spacing minimum इतना रखना है. ऐसा क्यों? Sir, the minimum Why we are not placing sleepers too close to each other? Sir, the sleepers are placed based on sleepers are not placed close to each other because sorry sir, I'm not able to recall it right now, though I have studied it. But what is pressure bulb? Sir, pressure bulb is the isobar diagram that a footing or the that a footing will have beneath the ground, sir. सिर्फ फुटिंग के केस में बनेगा या और केस में बन सकता है? Anything that is resting on the ground and it's a pressure that is being exerted to the ground. तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर बल्ब बनते हैं अली. Okay, और अगर वो प्रेशर बल्ब ओवरलैप हो रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस के ऊपर सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ रहे हैं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा. Okay. सेम हाईवे में भी ऐसा होता है, लेकिन what we are doing in simplified ways, we are just considering load distribution at an angle of 45 degree. Yes, sir, and they should not overlap, sir. अच्छा, breathing length क्या होता है? Sir, breathing length has been provided in a long welded rail in order to allow the expansion, sir, expansion of the contraction. ठीक है, और कैसे बताओगे कितनी है? Sir, breathing length की value तो sir I don't remember the value, sir. Okay, number of sleepers. Sir, number of sleepers. कितने देने हैं? Sir, first that is m plus x is the formula. X is the variation parameter. M is the length rail, and also we can we directly know that for broad gauge it is 1660 number of sleepers per kilometer, and for meter gauge it is 1540, and for narrow gauge it is 1310. Okay, on what basis x value is being decided? Like 4, 5, 6, 7. कितना यूज करना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? X value will be decided based on first is gauge condition, the second is the traffic through which the sleeper should go, and sir the speed capacity. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रेल है वो लॉन्ग वेल्डेड है या शॉर्ट वेल्डेड है? Sir, based on the length of the welding, sir, actually we understand that it is whether long welded or the short welded. In long welded rail, the length would be around 250 meter, 500 meter to 1000 meter, and 250 meter to 1000 meter. And in short welded rail, it is limited up to 130 meter.
अगर 1000 मीटर से ज्यादा होगा तो? So that would be the continuous welded rail, sir. ठीक है, और अभी डीएफसीसी मैक्सिमम कितना रेल लेंथ यूज कर रहा है? Sir, rail length, no idea. लॉन्ग वेल्डेड रेल में Long welded rail में sir 1200 meter है. Yes sir, 1200 meter. नहीं, 260 मीटर। Yes sir, 260 meter. हाँ, 260 मीटर की हमारे पास एक सिंगल रेल बन गई है वेल्ड करने के Okay. बाद। Okay sir. मतलब इसको हम सिंगल रेल ही लेके चल रहे हैं। अच्छा, स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? The sleeper density is number of the sleepers per unit rail length, sir. ओके, नंबर ऑफ द स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ। Yes sir. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने चाहिए पर किलोमीटर ट्रैक? Yes sir. कैन वी से नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर रेल ट्रैक? Yes sir, we can say that per kilometer rail track, sir. ओके। अच्छा, ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है अली? Sir, negative super elevation is actually when a turnout comes through a branch line, that the negative super elevation has been provided. In it, actually, the equilibrium speed of the branch line and the equilibrium speed of the turnout will collide and will provide negative super elevation. Because can I draw, sir, in order to explain, sir? Go ahead. Yes, go ahead. Sir, I'm not that is a approximate figure, sir. This one, but when in that case, if this line, it is a, we can say, symmetric split. So if one of them is a branch line and other is a turnout, then this rail will have lesser value of the speed and this will be the higher, but it is a contradiction, sir, here, because it's a turnout. So we have to provide negative cancer. नहीं, मतलब क्या होता है नेगेटिव कैंट या सुपर एलिवेशन का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव सुपर एलिवेशन का क्या मीनिंग है? Sir, I can say that the inner rail would be lifted upward rather than the outer rail, sir. तो ये हमेशा हमें मिलता है टर्न आउट पे कि नेगेटिव सुपर एलिवेशन होगा, और इट इज कंडीशनल? व्हाट डू यू थिंक? Sir, negative super elevation is conditional because if our low speed line crosses the turnout, then we can provide negative super elevation. ओके, और इसमें कर्वेचर का कोई लिंक नहीं है? Yes sir. कर्वेचर plays any part, or just it is independent of curvature of track? Sir, not, I don't know, sir. ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हील डाइवर्जेंस क्या होता है? Sir, heel divergence is actually the heel divergence has been provided that is the at the heel of the switch or the difference distance that through which it is shifted the tongue rail. So it is actually the flangeway clearance plus tongue rail width, sir, at the heel. Flangeway clearance plus width of the tongue rail at the heel. ठीक है, so can we say it is the distance between the running faces of stalk rail and this tongue rail? Yes sir, exactly. I was not able to come up with the exact definition, sir. ठीक है। अच्छा, फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग नाम सुने हो? The frog is crossing. Frog is crossing, sir. ठीक है, ओके, सो ठीक है, फाइन, ओके अली,
So I think right now I can give feedback to you. Yes. ठीक है, देखो आपका ट्रांसपोर्टेशन में मैंने खाली रेलवे से ही क्वेश्चन किए हैं, तो ठीक है आपका रेलवे में अभी तक तो आपका बेसिक ओके है। लेकिन देखो मैंने आपसे पूछा था ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड, आपने उसका आंसर किया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि ये ड्रेनेज पर्पस से हम प्रोवाइड करते हैं। तो Okay, मिनिमम वैल्यू जो हमने स्पेसिफाई करी है कि मिनिमम वैल्यू हमें इतना रखना है ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड पे, उसमें आप रीजन दे सकते हो कि ट्रेन अपने आप हमारा मूव ना करने लग जाए, या मान लो हम बहुत ज्यादा ग्रेडियंट दे के रखेंगे तो जब ट्रेन स्टार्ट होगी तो बहुत ज्यादा हमारी पावर कंज्यूम होगा ट्रेन का, लोकोमोटिव का, yes, जो हम चाहते नहीं। इसके लिए मिनिमम वैल्यू को स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है, जैसे 1/400 है, 1/200 है ना। yes, sir. तो कैंट सुपर एलिवेशन, तो हाईवे और रेलवे में क्या डिफरेंस है अली? तो Yes, sir. हाईवे में हम क्या करते हैं, आउटर एज को उठाते हैं रिस्पेक्ट टू इनर वन। Yes, sir. तो यहाँ पे आउटर रेल को उठा रहे हैं रिस्पेक्ट टू इनर वन। बट पे Okay, sir. अटेंशन, हाईवे में हम बॉटम लेयर से ही क्या करते हैं, आउटर एज को उठाते हुए चलते हैं रिस्पेक्ट टू इनर वन, मतलब हम कैम्बर को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, और रोड का जो सेंट्रल पार्ट उठा हुआ होता है ना, Yes, sir. अब वो हम एलिमिनेट करेंगे और आउटर एज को उठा देंगे रिस्पेक्ट टू इनर वन। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता, जी सर, रेलवे में कैम्बर रेलवे में एलिमिनेट नहीं करता। नहीं होता, इवन कर पे भी आपको Yes, कैम्बर मिलेगा। तो yes, sir. सुपर एलिवेशन हम कैसे अचीव करते हैं, तो जो हमारा ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट, उसका Yes, sir. थिकनेस आउटर वाली साइड पे ज्यादा होता है, इनर साइड पे कम होता है ब्लास्ट कुशन। Okay, sir. फॉर्मेशन लेवल ही रहेगा, जो फॉर्मेशन आपका स्ट्रेट ट्रैक में होगा सेम आपको कर्व पे मिलेगा एज इट इज, Yes, sir. ठीक है। और फॉर्मूला मैंने पूछा था, जैसे आपने जी वी स्क्वायर अपन 127 आर बताया, ठीक है फॉर्मूला, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना, हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते रेलवे के अंदर, ये ध्यान रखना। जब हम ये Yes, इक्वेशन sir. डिराइव करते हैं तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे होते, जबकि हम हाईवे में फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, Yes, sir. ठीक है। दैट बेसिक आई जस्ट वांट टू नो। तो हैव यू एवर सीन क्रीप इंडिकेटर? Yes, no, sir. Live never. I have seen in a picture, sir. That is, मतलब a small post, sir, but the picture is not quite understanding in there. ठीक है, आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप Yes, व्हेन वी sir. हैव क्रीप इंडिकेटर्स, ठीक है। Okay, sir. एंड ठीक है, स्पेसिंग मैंने आपसे बॉटम विड्थ पूछा था, आपने थोड़ा समय ले लिया, ठीक है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट करके बता दी। हो सकता है कि आपके ब्रेन में क्वेश्चन ही ना बैठा हो, दैट इज फाइन। Yes, sir. तो साइड स्लोप आपको दिया हुआ है, तो आपसे वो किसी भी लेयर की विड्थ पूछ सकते हैं। मान लो जैसे इसमें टोटल लेयर कितने आएंगे, 6 मीटर हाइट होगा और 20 सेंटीमीटर लेयर थिकनेस है, टोटल लेयर कितनी होगी अली? Sir, total है 30. 30। अब वो बोल देंगे बताओ यहाँ पे हमारे पास हम 16th लेयर पे वर्क कर रहे हैं और आपको वहाँ साइड पे भेजा जा रहा है, तो बताओ उसकी लेयर विड्थ कितनी होगी? Sir, that I can calculate, sir. मतलब from bottom से यस यस 30. यस यस। आप टॉप से चलना है, आपको टॉप पता होगा हमेशा। Yes, sir. Okay. अब टॉप से आ जाओगे ना, बॉटम का गिवन होगा तो बॉटम से ऊपर भी बढ़ सकते हो। बॉटम Okay. से स्टार्ट करोगे तो आपको कम करना है, टॉप से चलोगे तो आपको ऐड करनी चीजें, ठीक है। तो जैसे हम स्लीपर का स्पेसिंग को कंस्ट्रेंट करते हैं कि मिनिमम हम इतना स्पेसिंग रखना ही है, Yes, तो sir. इसका मेन रीजन होता है कि जब भी लोड पड़ता है, क्योंकि रेल के ऊपर जो लोड आएगा वो स्लीपर से जाएगा ब्लास्ट में, Yes, और sir. रेल के ऊपर जो रोलिंग लोड होता है, रेल वो ट्रांसफर करती है स्लीपर के ऊपर एज अ पॉइंट लोड, और Yes. स्लीपर उस पॉइंट लोड को यूटीएल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ब्लास्ट में भेज देता है। और जबकि जो स्लीपर का लोड लग रहा होता है ब्लास्ट के ऊपर, एक तरह से लाइन लोड होता है, लाइन Yes, की sir. फॉर्म में, ठीक है। तो स्ट्रेस जब हम बात करते हैं कि हमारा सॉइल ओवर स्ट्रेस होना चाहिए, तो हम प्रेशर बल्ब ड्रॉ करते हैं, तो ओवरलैपिंग और प्रेशर बल्ब नहीं होना चाहिए, एंड केस स्टडी इज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मिनिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया हैज बीन गिवन, Yes, sir. ठीक है। तो प्रेशर बल्ब क्या होगा, ठीक है। ब्रेथिंग लेंथ भी आपका ओके। नंबर जो आपने बोला m+x, तो जनरली राइट नाउ, पहले कल्चर फॉरन में होता था कि Yes, sir. पर रेल के नीचे, जैसे 13 मीटर लंबी रेल है ब्रॉड गेज में, 12.8 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू, उसके नीचे नंबर ऑफ Yes, sir. स्लीपर कितने देने हैं, जैसे मान लो स्लीपर डेंसिटी m+7 है, तो 20 स्लीपर Yes. हो गया। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर ट्रैक के नीचे वो नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हैं वो हम बताते हैं। पहले कल्चर फॉरेन में था, अब हम इंडिया में भी इसको अडॉप्ट करने लग गए हैं और कर रहे हैं बेसिकली, Okay, और ये sir. ज्यादा कन्वीनियंट है बताना, Per kilometer rail, sir. हाँ। मतलब 1 किलोमीटर रेल ट्रैक के नीचे नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हैं वो स्लीपर डेंसिटी है, Okay, sir. या पर रेल के नीचे नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हैं वो भी स्लीपर डेंसिटी है, बोथ आर सेम। व्हिच वन इज मोर कन्वीनियंट, पर किलोमीटर Sir. ट्रैक, बट क्वांटिटी ऑफ स्लीपर दैट वी हैव इज स्लीपर डेंसिटी, दैट इज मोर कन्वीनियंट। Okay, sir. एंड नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो आप इसको बता नहीं पाए ढंग से। Yes, sir. मतलब I तो have क्या होता है, studied, जैसे हम but आउटर रेल को उठा रहे हैं,
आउटर रेल को उठा रहे हैं रिस्पेक्ट टू इनर वन, दैट Yes, इज sir. पॉजिटिव सुपर एलिवेशन। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे तो ये डिपेंड करता है अली कर्वेचर के ऊपर। आपने जो फिगर ड्रॉ किया था ना वो Yes, sir. अपोजिट कर्वेचर का था। अगर आप Okay, sir. सेम कर्वेचर का फिगर ड्रॉ कर दोगे डेफिनेटली यू विल नॉट हैव दिस नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ये सेम कर्वेचर का हो जाएगा, देखना जरा, अगर ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक It है, is clear. एंड दिस विल बी द दिस लाइक दिस वन, दिस विल बी द अपोजिट कर्वेचर। इसको मैं 1 लिख रहा हूँ वो अपोजिट कर्वेचर वाला है, Yes, sir. और एक मेन लाइन है मेरा, इसको मैंने 1 लिख दिया वो अपोजिट कर्वेचर वाला है। इज इट Yes, क्लियर? sir. Sir, it's in opposite curvature. It is negative super elevation is provided. तभी आता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन। Okay, sir. स्पीड तो ट्रेन तो मूव करेगा ही करेगा। मैक्सिमम स्पीड कितना है ट्रेन का? इंडिया में जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी है? Sir, Vande Bharat, sir. कितनी स्पीड है? 180 kmph, sir. और अभी हमने डीएफसीसी ने अभी डबल डेकर ट्रेन का हम सक्सेसफुली ट्रायल कर चुके हैं और वो रन हो Yes. चुका है, Yes, sir. डबल डेकर। ठीक है, तो थोड़ा प्रोजेक्ट में भी पढ़ लो, जो आपका एडीएफसी है, डब्ल्यूडीएफसी है, तो 32.5 टन एक्सल लोड है। लोड कितना होगा, किसके लिए डिजाइन? देखिए ना, आस्क यू, अगर आपको डिजाइन करना है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? तो आपका आंसर होगा कि सर हम सबसे पहले एक्सल लोड चेक करेंगे कितना है। एक्सल लोड के बिहाफ के ऊपर ही नीचे जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, लाइक वी हैव रेल, वी हैव स्लीपर, वी हैव बलास्ट, वी हैव सॉइल सेपरेट, तो किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, सो वी विल Depends on फिक्स axle देयर load, sir. प्रॉपर्टीज। Okay, sir. फाइन। सो Yes, sir. बाकी चीजें ठीक है अली, ठीक है। आपका ये रेलवे वाला पार्ट तो ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिग्नल से आपसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि आपका सिविल का है तो सिग्नल माइट भी इतना ज्यादा ना वो पूछे। Yes, sir. और सिग्नल का मोबाइल सर के ऊपर मुझे आपने भी थोड़ा फोकस करना है। सर एक्चुअली सिग्नल का मुझे भी उतना आइडिया है नहीं, मतलब मैंने उतना नहीं पढ़ा सिग्नल्स। एक बार देख लेना, जैसे सीमा बोर्ड सिग्नल्स होते हैं जैसे आपके, यस है सर। ना, सिग्नल का एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है। जैसे एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है ना, दोनों के बीच में हम जो एक टर्म आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो ओके जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग आपसे पूछ सकते हैं वो, फ्लैश यस बट सर। वेल्डिंग कहाँ पे करोगे? जैसे साइट पे करोगे, आपका इंडस्ट्री में होगा, या थर्मिट सर वेल्डिंग फ्लैश बट है ना? वेल्डिंग तो सर साइट पे होती है शायद। और थर्मिट वेल्डिंग कहाँ होती है? सर थर्माइट वेल्डिंग का आइडिया नहीं सर। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को कहते हैं सर थर्माइट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग होती है साइट पे, साइट पे थर्माइट एक वेल्डिंग। मटेरियल डालते हैं, इग्नाइट करते हैं। एक बार चेक करना, इसको आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी। ओके सर। ठीक है, सो हैव अ लुक, थोड़ा चीजों को और थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, और रेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। और लोकोमोटिव में जो कौन से जो व्हील्स होते हैं वो पावर ड्रिवन है, मतलब जो पावर देंगे, यस है सर। ना। ड्राइविंग व्हील ट्रेन में ना अलग ही होंगे। जैसे यस मान लो सर। 246 है या 242 है, एग्जाम्पल 242 है, तो जो बीच वाले 4 पहिए होंगे दे आर द ड्राइविंग व्हील्स। ओके सर। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। रोलिंग स्टॉक क्या होता है अली? सर रोलिंग स्टॉक है सर, वैगन लोकोमोटिव्स दे आर द रोलिंग स्टॉक सर। ठीक है, ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। और यस मार्शलिंग यार्ड? sir, marshalling yard where the breakup and the formation of the coaches is been done is the marshalling yard sir. ठीक ठीक है, ठीक है। थोड़ा आप कंक्रीट के ऊपर फोकस करना, टेस्टिंग के ऊपर। Okay sir. ठीक है, so anything else?